HTML चल रहा था ना हमारा। मैम आपने तो 7th क्लास का लगाया। इसमें ही आईडी नहीं है और ठीक है, मुझे भी पता है क्या किया हमने। बोल मतलब पढ़ ले। खुद तो पढ़ता नहीं। इंट्रोडक्शन। It is fun to play games, chat with friends, and even get help for your homework from the internet. All this information is present on websites and web pages on the internet. But do you know how these web pages are created? The web pages on the internet are created by using hypertext markup language or HTML. HTML is both easy and simple to understand and use. You can create an HTML page in two ways. The first way is to write HTML code. This code can be written in any text editor such as Notepad and WordPad. The second way is to use an application program in which you can add text and graphics without writing the code. Such application programs are called What You See Is What You Get or WYSIWYG editors. These application programs allow you to use menus and other graphical interface components to add text and graphics to your web pages. You can even use these menus and other graphical interface components to format the text you had added. After you have created your web page, you can open it in two different ways. Can you think of these ways? You can either open the web pages you created in the web browser or HTML editor. This editor can either be a text editor or a WYSIWYG editor. When you open a web page in a browser, you do not see any code. You see the web page as other people will see it on the internet. The content of a web page opened in the web browser cannot be changed. These days, no web browser supports HTML5 pages fully because HTML5 has not been standardized. However, many new elements of HTML5 are supported by all commonly used web browsers. But when you open a web page in an editor, you can see its code and will be able to make changes to it. The activity state following statements are true or false. True. You can view web page only in a web browser. True. क्या होगा? ठीक है? GFN was developed by IBM in 1989. False. The standardized version of XML was now as HTML. False क्या मैं false बोलता हूँ भाई The latest version HTML is true. False. The text size are
at least 5 types of information that you can include in your own web page. You can include many different types of information on your web page. Examples of such information are your hobbies, your favorite subjects, your favorite games, your favorite vacation, and your preferred television shows. The first version HTML was developed by IBM in early 1980s and was called Journal Markup Language. GML की full form लिख लो. Journal Markup Language. जर्नल मार्कअप इतनी आवाज क्यों आई? कॉपी नहीं कर. जर्नल मार्कअप लैंग्वेज नहीं दिख रहा ना? नहीं मैम दिख रहा है लिखने लायक है बी सिंसियर प्लीज. यार तू उधर चल ले keep quiet. देखना हम क्या लिखना है देखो पहले ध्यान से. According to HTML, Each programming language has its own set of implementations. Some programming languages use primitives and others use statements to tell the program what to do. How does HTML give instructions to web browsers? ध्यान से देखो. How does HTML tell web browser what to do? कैसे बताएंगे ये? HTML uses code elements called tags. These tags tell web browsers about what they should do. This is why HTML is also called a tag-based programming language. Let's take a look at how HTML tags are written. You can recognize an HTML tag by the less than and greater than symbols that surround the tag. The name of the tag is the word inside the less than and greater than. ये बताओ ये किस तरीके से आपको टैग लगाना है. ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में टैग का नाम लिखना है. ठीक है, ये आपको बता रही हूँ. इसको सुन लो ध्यान से. वो क्या कह रही है? मैं क्लास से बाहर कर दूंगी अब जो कुछ बोलो. ना तुम पढ़ रहे हो ना पढ़ने दे रहे हो. कोई क्वेश्चन है? पूछना है कुछ? Symbols. There are two types of HTML tags, empty tags and container tags. पढ़ा जब कौन सा एक मिनट रुक जाओ. एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग. हाँ पता है कौन कौन सी होती है? कंटेनर टैग कौन सी कंटेनर खाली टैग का क्या मतलब होता है? खाली टैग नहीं होता जिसको हम ओपन करके क्लोज नहीं करते. कंटेनर कौन सी होती है? ओपन करके क्लोज करते हैं. ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान से. Empty tags have only one function. Therefore, they do not have a closing tag. For example, if you want to draw a line or add a line break in your web page, you use an empty tag. Container tags do not have a limit and can show as much content as you want. A container tag has an opening and a closing tag. The closing tag is similar to the opening tag and specifies that you have finished using a container tag. The closing tag has a slash symbol after the less than symbol. The paragraph tag P is an example of a container tag. P You can use this tag to specify the content of one paragraph. P टैग किसका एग्जांपल है? कंटेनर टैग का. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कंटेनर टैग का कौन सा एग्जांपल है और एम्प्टी टैग का कौन सा एग्जांपल है. ठीक है, Its closing tag is /p. Some
For example, you can use the align attribute to center the text in your paragraph. Note that you cannot use the attributes of one tag with another tag. Many programming languages have specific rules about their code. Do you think there are any rules for coding in HTML? Like any other programming language, HTML also has certain rules. Let's learn about these rules. One rule that makes HTML easier to use is that HTML tags are not case sensitive. You can write them in capital letters, both capital and small letters, or only in small letters. However, it is recommended that you write your tags in small letters because that might become a rule in later versions of HTML. The first rule does not apply to the values you assign to some attributes. This is because some attribute values are case sensitive. Another rule for writing HTML code is that there can be no spaces within the opening or closing tag. But spaces after an opening tag and closing tag do not matter. ये रूल्स बताए गए हैं कोडिंग के। पहला क्या है, नॉट केस सेंसिटिव, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपर केस में हो या वो लोअर केस में हो, ठीक है। लोअर केस रिकमेंडेड, ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यू माइट बी केस होते हैं हमारे अपर, लोअर, सेंसिटिव, ये हमारे केस होते हैं। केस का मतलब समझते हो, लिखते हैं जैसे हम फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, देन हमारे लेटर्स क्या स्मॉल होते हैं, ये सेंसिटिव केस होता है, ठीक है। वो बताया कैन नॉट हैव स्पेस नहीं मिलेगा। बॉडी सम टेक्स्ट बॉडी इज करेक्ट वाइट, ऊपर वाला लिखा हुआ बॉडी और सम टेक्स्ट ये आपका करेक्ट है। बेटा टेस्ट नहीं ना फिर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ बॉडी में स्पेस है ना, ऐसा आपको नहीं लिखना। मुझे बता रहा है किस तरीके से आपको लिखना है, राइट करने का भी तरीका होता है, ठीक है। बेटा तू क्लास से बाहर से वाला मैं ऐसे यार थोड़ा ना साइड वाले से दिखने का, ये दोनों साइड करने का है। So spaces before or after a paragraph tag are ignored by HTML. This is useful if you accidentally added two spaces between words because only one space will be displayed by HTML. You can also use one HTML tag inside another HTML tag. To do this, both the opening and closing tag, one tag should be inside another HTML. For example, you can use the bold or B tag inside the paragraph tag. To create a web page, you need to follow the structure defined for an HTML page. Let's learn more about this structure. When you create an HTML page, you first need to tell the web browser that the page uses HTML. To do this, you use the HTML tag. All HTML pages are divided into two sections. The first section represents the title of the page and the second section represents the main content of the page. क्या होता है टाइटल? The section that represents the title of the page is called. बताओ टाइटल क्या होता है? बता भाई, खड़ा हो। मैं हाँ, टाइटल बार नाम लिखते हैं उसका, किसका? एक बार सुबह थोड़ा साइड को बोलो फटाफट बोलो। क्या वो बनाते हैं उसको, नहीं पता। हम नाम लिखते हैं उसका बना के। ऊपर इधर देखो, इधर देखो, HTML ऐसा टाइप होता है, मैंने बोला बैठने के लिए, ठीक है। इस तरह टाइटल ऊपर
The head section. This section uses the head tag. The main tag in the head tag is the title tag. The title tag is used to specify the name of the page. When you open this page in the web browser, this name is displayed on the title bar. The second section is called the body section. This section contains the main content of the page and uses the body tag. You can use many tags inside the body tag, or you can even directly write the content of the page in the body tag. Though there are many HTML editors that help you create web pages, you can always use HTML code to create your own web page without the help of any application. Let's see how this can be done. One of the simplest ways to create an HTML page is to use the Notepad application. This application is present on all computers that have the Windows operating system. To open the menu that helps you view all programs on your computer, from the taskbar, click Start. To display the list of all programs on your computer, from the Start menu, click All Programs. The Accessories menu contains the command to open many applications such as Notepad and WordPad. To display the command for opening the Notepad application, from the All Programs menu, click Accessories. To open the Notepad application, from the Accessories menu, click the Notepad command. The Notepad application opens. In this application, you can specify the HTML code for a basic page and then save the page. First, you specify the HTML opening tag followed by the opening head tag. Next, you specify the title of the page in the title tag. Then, you specify the closing head tag and enter the body opening and closing tags. Finally, you specify the closing HTML tag. After you have entered the code for your HTML page, you need to save the page. To begin this process, from the menu bar, click File. To specify that you do not want to save the file as a text file, from the File menu, click the Save As command. The Save As dialog box opens. From this dialog box, you can go to the folder. इधर देखो ध्यान से, ठीक है? लाइब्रेरीज के अंदर वाई डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, CD ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जो भी आपके सिस्टम में होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है? अब मैंने कल बताया था ना सेव कैसे करी जाती है HTML की फाइल, तो लोकेशन आप सेट कर दोगे, नीचे क्या है फाइल नेम, नाम डालोगे और .html डालोगे, अभी बताएंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो देना है आप, अब इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. Where you want to save your first HTML file. To specify a name for your HTML page, in the file name box, type firstpage.html. ठीक है, .html. To ensure that the file is not saved as a text file, in the Save As dialog box, click the Save As type box. From the Save As type list, click the All Files option. To finish saving the page,
on the Save As dialog box, click Save. Your first HTML page is saved. ठीक है? आया समझ में कैसे सेव करना है? That's why we correct that. आया समझ में सेव करना? Yes, ma'am. हम्म? When you open different websites, you see text written in different colors and fonts. Some text is in bold, italics, or underlined. Let's see how this can be done by using HTML code. The default alignment of the text on your web page is left. You can change the alignment of your text. क्या होता है alignment? To do this, Alignment क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी आप बोलो। ये alignments क्या होते हैं? ये आगे फर्स्ट अपना अरे ये फर्स्ट बेंच पे कौन बैठी है? खड़े हो। चलो बेटा बताओ अलाइनमेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं अलाइनमेंट? क्या होते हैं अलाइनमेंट? कितने टाइप्स के होते हैं ये भी नहीं पता, होते क्या ये भी नहीं पता। 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई इसमें नहीं होता, हाँ लेफ्ट है। डिफॉल्ट में जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। अभी इसने बोला था ना, सुना नहीं? ध्यान से पढ़ लो, ठीक है? बैठ जाओ, ध्यान दो, क्या चल रहा है? मैम अलाइनमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा हिंदी में नहीं पता। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है जो हमें डायरेक्शन होती है टेक्स्ट की वो होती है, ठीक है? दिशा बोलो, चलो मैं हिंदी में बता दूँ, ठीक है? राइट में, लेफ्ट में, सेंटर। एचटीएमएल में आप लेफ्ट राइट और सेंटर 4 साइड की होते हैं तो मैम चौथा साइड कौन सा? चौथा इसमें नहीं लिख सकता ना बेटा, वो अलग वर्ड में लगता है। जस्टिफाई जैसे नॉर्मल 4 टाइप्स के होते हैं, जनरल अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? लेकिन जो एचटीएमएल में कोडिंग है वो लेफ्ट राइट और सेंटर की ही लगती है, ठीक है? जस्टिफाई का मतलब होता है आपका राइट और लेफ्ट से इक्वल होना। मैं क्या बोल रही हूँ पीछे? ये इतने बच्चे सब बात हो मेरे को नई क्लास में, ठीक है? चले बस। you use the align attribute of the p tag with the values left, center, right, and justify. To change the alignment of a paragraph to centered, in the notepad file, type p. HTML के अंदर हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। कैसे से हमें टैगिंग तो लगानी है ना? टैग लगा के हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है? The align is equal to center. After specifying the alignment, you can type the sentence you want to enter. Next, you close the p tag. To do this, in the notepad file, type /p. There are different HTML tags for making text bold, italics, and underlined. The B tag allows you to make text bold,
The I tag allows you to make text italic and the U tag allows you to make text underlined. ये हम लिख चुके हैं मैंने. You can even use multiple tags on the same text to make it bold, italic and underlined. To make text bold, in the notepad file, type your text between the opening and closing B tags. To make text italic, in the notepad file, type your text between the opening and closing I tags. To make text underlined, in the notepad file, type your text between the opening and closing U tags. In addition to making text bold, you can also change its font, size and color. To change the font of the text on a web page, you use the font tag along with the face attribute. To change the font of some text to the Korean new font, in the notepad file, type font face is equal to. इन्होंने यहाँ पे font face टाइप किया है. ठीक है, ये अप्लाई होके आएगा. ठीक है, समझ में आया तुम्हारे टैग सबको? कौन सा टैग हुई है? निहारिका नाम है ना तुम्हारा? समझ में आ रहा है? मेरा उसका अच्छा, निहारिका. तुम्हारा? आयशा. हाँ? आयशा. आयशा. आया समझ में? क्या लिखा हो ऊपर? ये समझ आ रहा सबको? पूछना है? फर्स्ट बेंच पूछना है? Quote, Korean new quote. After this, you can type the text you want to show in the Korean new font. To change the font back to the regular font, after the required text, type /font. You can also use the font tag to change the size of text. To do this, you can use the size attribute with the font tag. इन्होंने The size attribute helps you to change the size of the text according to the number. जब देखो अलाइनमेंट भी सेट कर दिया, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया टेक्स्ट को, उधर देखो बेटा, ठीक है, और फॉन्ट फेस भी चेंज कर दिया. ये कई सारे टैग इकट्ठा लगा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज करेंगे. अभी देखना, ध्यान से देखो इसको. फॉन्ट क्या होता है? The smaller number means the text is small and a larger number means the text. मैंने बताया था कि जैसे अलग अलग हमारे टेक्स्ट है ना, जैसे हमारी बुक का फॉन्ट अलग होता है, लिखने का स्टाइल सिस्टम में वो अलग अलग होता है ना सबका, है ना. न्यूज़पेपर में अलग फॉन्ट आता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कर्सिव है, वो होता है फॉन्ट. ठीक है, मम्मी सारे एक साथ लिख दिया. हाँ, एक साथ ही लिख के जाते हैं ऐसे. ऐसे फाइल बनेगी. हाँ, अभी देखो तो सही आगे क्या हो रहा है. It is large. To change the size of your page title to 6, before the page title, type font size is equal to 6. To ensure that only the title is in size 6, at the end of the title, type /font. The color attribute of the font tag allows you to change the color of your text. There are two different ways in which you can indicate the color you want. You can either specify a recognized color name or provide the red, green, blue or RGB value of the color. A list of commonly known color names and their RGB values are displayed. ये आपकी बुक में एडिटिंग है. To change the color of a particular sentence to purple, before the sentence, type font color is equal to purple quote. After this, you can write the sentence. अभी फिर कितने मिनट का होता To है? ensure that the next sentence is not in purple color, you should close the font tab. To do this, after the sentence, type /font. By default, HTML does not recognize paragraph breaks. To add a paragraph break, you need to add 2 line
breaks by using the BR tag. This tag does not have a closing tag. To add a paragraph break before a sentence, type BR. HTML also has specific tags for adding headings of different sizes to your web page. This can be done by using the H asterisk tags, where the asterisk represents a number ranging from 1 to 6. The largest heading that you can add to your web page is heading 1 and the smallest is heading 6. This requires you to use the H1 and H6 tags respectively. To add a heading of size 3 to your web page, in the notepad file, type H3. This is a size 3 heading, /H3. Additionally, you can even separate your web page into two sections by adding a horizontal line to the page. You can do this by using the HR tag. The HR tag does not have a closing tag, but it does have some attributes. These attributes are size, width, align, color, and no shade. These attributes क्या है अच्छा horizontal row, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि allow to add a horizontal line to the page. ये हमारी जो है इसमें हम choosing tag not have closing tag sorry, ठीक है। has attribute size, weight, color हम दे सकते हैं और shade भी हम दे सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अब पूछो क्या पूछना था कोई बोलो। मैम इसमें शेड दे सकते हैं? हाँ देखो और मैं वो कर रही थी शेड तो दे दो तो लेना है। शेड allow you to change the default size, weight, alignment, color, and shading of the horizontal line. To do this, in the notepad file, type HR. After you save the HTML file you created, you can view it on your browser. ये देखो ऐसे बन गया Yes, ma'am. ऐसे आएगा सेंटर में दिस इज माय वेब पेज ठीक है अंडरलाइन इटैलिक बोल्ड भी आ गया ये HR ये बन गया ठीक है ऐसे बनेगा आया समझ में वहाँ टैग लिख दिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्या क्या नहीं लगाना आया समझ में यस मैम आया समझ में उसका रिजल्ट ये